अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेक्चर है जी ऑल ओवर, थ्रू आउट, इन एवरी पार्ट ऑफ। ऑल ओवर यानी हर हिस्से में, हर जगह। We see some examples here. After novel, I know his book has sold all over the world, but he does go on about it. मैं जानता हूँ कि his book has sold all over the world. उसकी जो बुक है पूरी दुनिया में फरोख्त हुई। I'm sorry, I split my wine all over the floor. मुझे अफसोस है कि मैंने वाइन जो है ऑल ओवर द फ्लोर स्प्लिट कर दी या फर्श पे गिरा दी। तो ऑल ओवर मीन्स सारी, हर जगह, हर हिस्से में। ऑल ओवर अगेन which is an emphatic use of again generally expressed in a negative sense, यानी किसी नेगेटिव सेंस में ऑल ओवर यूज होता है। आई एम नॉट गोइंग ओवर इट ऑल ओवर अगेन, इट्स सपोज टू बी माई डे ऑफ। ऊपर हमने डे ऑफ पढ़ा था, ओ डबल एफ ऑफ, तो वो बी नेगेटिव सेंस में आता है। और ऑल ओवर ऊपर पढ़ा जी, फर्श के ऊपर मैंने सारी शराब गिरा दी, तो ये भी नेगेटिव सेंस में यूज होता है। To sell here has a passive meaning, I to be bought by the public. To sell ये पूरी पब्लिक की तरफ से खरीदा गया, इसका एक पैसिव मीनिंग है। लेकिन ऑल ओवर जो है वो हमें एक नेगेटिव मीनिंग देता है। Finished often used for a difficult relationship or period of time coming to an end. Now that is all over between Jane and her boyfriend. जेन और उसके बॉयफ्रेंड के दरमियान सब खत्म हो गया। She should be able to afford the time to come round and see us. The Prime Minister believes that once the war is all over, there will be an upturn in foreign trade. To work out. To calculate, think of a plan, devise. You'd better work out exactly how much you are overdrawn by. वर्कआउट का मतलब है थिंक, सोचना, आपका प्लान, एक मंसूबे के मुताबिक सोचना, या एक मंसूबा बनाते हुए हम क्या सोच रहे होते हैं वो सोचना, कैलकुलेट करना, या फिर डिवाइस देना या लेना। दिस इज कॉल्ड वर्कआउट। The police will have to work out a way of acquiring more evidence. So far, they haven't go much to go on. Last year, my colleagues and I worked out a new system of charging the firm's clients, but the board of directors turned it down. To succeed in understanding something, someone. ये दो तरह ऊपर टू वर्कआउट यूज हुआ, टू कैलकुलेट, थिंक ऑफ अ प्लान, डिवाइस में, और नंबर 2 आता है टू सक्सीड इन अंडरस्टैंडिंग समथिंग और समवन। टू सक्सीड कामयाब हो जाना, इन अंडरस्टैंडिंग समथिंग किसी चीज को या किसी को समझने में हम कामयाब हो गए, तो टू वर्कआउट उसमें भी यूज होगा। आई कांट वर्क आउट व्हाट ही हैज गोइंग ऑन अबाउट, कैन यू? कहता है आई कांट वर्क आउट, मैं नहीं कर सकता। व्हाट ही इज गोइंग ऑन अबाउट, वो क्या कर रहा है या किसके बारे में कर रहा है। कैन यू, क्या तुम कर सकते हो? We are trying to work out why the computer couldn't handle the data we find into. Ever though I have known him for ages, I still can't work him out. Third है to be successful, often a relationship between people or a situation, business, etc. To be successful. Successful होने में often a relationship between people or situation, business, etc. They went out together for quite a while, but unfortunately, it didn't work out. You have been with our company for 2 months now, and reluctantly we have to inform you that it hasn't really worked out. The company's turnover is not looking very healthy at the moment, but I'm sure everything will work out. यहाँ पे will work out, everything will fine, और everything will work out. सब कुछ ठीक हो जाएगा।
वर्कआउट की जगह यहाँ फाइन, वर्कआउट फाइन के लिए भी यहाँ इस्तेमाल हुआ है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि फाइन, एवरीथिंग विल फाइन अक्सर कॉमन बोला जाता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हम वर्कआउट का पढ़ रहे हैं तो वर्कआउट को यहाँ फाइन के लिए यूज किया गया है। 4 में आ रहा है टू एंड अप कॉस्टिंग टू अमाउंट टू द फाइनल कॉस्ट ऑफ समथिंग। I'm not going over it all over again. I have already told you that it will work out at about 20,000 pounds. Go on, tell me the truth. How much do you think it will work out at? We thought that the holiday was going to be affordable, but in the end, it worked out very expensive. Worked out to be यहाँ यूज हो रहा है कि वी थॉट, हमने सोचा दी हॉलीडे वाज गोइंग टू बी अफोर्डेबल होंगी, बट इन दी एंड, लेकिन आखिर में क्या हुआ, इट वर्कड आउट वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत हमारे लिए महंगी पड़ गई या हो सकती हैं। नेक्स्ट है आप up mean when a specific period of time finish, often used in sports competitions